सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम शलपुरज महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरी जी योगीराज की जय। हरिओम। नवरात्र के पंचम दिवस पर आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। On the fifth day of the divine days of the Devi, of the Mateshwari, on the fifth day of Navratri, I would like to wish you all a very happy Navratri. So this fifth day of these holy days is dedicated to Devi Skandamata. Devi Skandamata is incarnation of Parvati. It's Parvati herself. Skanda and Mata. The meaning of Skandamata. Skanda means it's the other name of the first son, the eldest son of Bhagavan Sadashiv and Parvati Maya, which is Karthikeya. So Kartikeya's other name is Skanda and Mata is mother. So the mother of Karthikeya, of Skanda, is Skandamata. So the beautiful divine story behind this Mata is her form. When you know that when she was married to Lord Shiva, in her previous life, she was known as Sati. And at that time, between that period, after Sati gave her life into the Havan Kund, into the Yajna, between that period, there was two big Rakshasas, two great demons, Tarkasur and one of his other friends. And they were so powerful, and they had the siddhi, they had the blessings of the gods, that they couldn't be killed, they couldn't be destroyed by Lord Shiva, by Vishnu, by Brahma, by Agni, by Varun. They could not be killed by any of the current Devi Devtas. The only option was that they could be killed by some god who doesn't exist. So how would this work? So the god and goddesses decided that he could be only killed by the offspring of Lord Shiva and Parvati. So for that, Lord Shiva would have to remarry, and Lord Shiva would have to have a child that child can kill Tarkasur. So then what happened was that after Sati gave her life, Lord Shiva went into the state of he didn't have any attachments, he didn't want to do anything with anyone's world, he was completely dedicated and devotional to his tapasya, to his dhyan, that it didn't matter and nothing else in this world mattered to him. So then all the Devi Devtas went to Lord Vishnu and prayed to Lord Vishnu, please get Lord Shiva again married, that we can all be peaceful from all this distress which Tarkasur and his friend are creating. And Lord Vishnu said, this is all your fault. If you all wouldn't go to Daksh Prajapati's Yajna ceremony, if you all would listen to Lord Shiva and would not go without Lord Shiva and Mata Sati, Sati would never go to that Yajna and she would never give her life away. So it is all your fault. So then Sage Narada, as I was saying on the second day of these holy days of Navratri, on the day of Brahmacharini, as I mentioned, that Sage Narada went to Brahmacharini and he said that you still have an opportunity, there is still an option that you can get married to Lord Shiva. But for that, you will have to do great tapasya, great penance. So that time then,
Devi Brahmacharini. She did so dedicated devotional tapasya, so great tapasya which no one has ever seen till now. That great tapasya she did to gain Lord Shiva as her husband. And then when she got married to Lord Shiva, after this great tapasya, Brahmaji blessed them that now I bless you both that you can get married. Lord Shiva came out of his great tapasya, great sadhana, and they finally got married. And because of their union, a seed was developed. And that seed was so radiant, so bright. It was so bright that it couldn't be handled by anyone. That's why that seed was passed on to the Fire Lord, Agnidev. And Agnidev was the person who was supposed to take care or to carry the seed. But even for the Lord of Fire, even for Agnidev, that seed was too bright. It was too radiant that he couldn't handle it. So then it was passed on to Mata Ganga. Water is cool, peaceful. So it was handed over to Mata Ganga. But after some time, even Mata Ganga couldn't take care of that seed or couldn't take the seed with her because it was so radiant. And the only person who could do it was Mata Parvati herself. So then Mata Parvati herself came in the form of water, joined Ganga, and then they carried the seed. And that seed was the great son of Lord Shiva and Parvati, Bhagwan Karthikeya. Karthikeya had 6 heads, and he was taken care by 6 matas, 6 divine ladies. And that's why they were known as Kritika. And because the ladies were known as Kritika, he was known as Karthikeya. In South India, Karthikeya is also known as Murugan. And Karthikeya or Murugan was the commander-in-chief for the army of all the god and goddesses. He was the head who used to lead the army. And he was such a powerful person, and he then killed Tarakasura and his friend. And the 6 heads also represent the 6 chakras: Muladhara, Swadhisthana, Manipur, Anahad, Vishuddhi, and Agya. These 6 chakras are the Shakti, and the 1 chakra, Sahasrara, is Lord Shiva. So when they unite, when all the 6 chakras and the Sahasrara chakra unite, then Karthikeya was born. And Skandamata's form is such as that she has 4 arms. In one arm she is carrying the baby form of Karthikeya, Skanda Bhagavan. In upper 2 arms she is carrying 2 lotuses. And one arm she is giving blessings to all her devotees. And her asan, her seat is a lotus, and that lotus is placed on a lion, and her mode of transport, her vehicle, is a lion. So all those who pray in these great days of Skandamata are automatically praying to Lord Karthikeya. She is the greatest mother of the greatest God, the most powerful God, who is our commander-in-chief, who is leading the army of all the gods and goddesses. So worshipping her, praying to her, is automatically praying to Bhagwan Karthikeya. And that brings prosperity, that brings calmness and peaceful, and Karthikeya and Skandamata are protecting you and protecting your surroundings, protecting your family, protecting your house. If you worship her, then they are protecting and they are blessing all their bhaktas, as a mother is always Karunamayi. And the great Karthikeya is sitting in the lap of the great mother. When you are in the lap of the mother, you have nothing to worry about. You don't need to even ask for anything. You don't need to say, Mata Shri, I'm hungry. No. The mother will automatically feed you because she knows that's your child. So she will always be there and taking care for you because she is the divine mother, the caring one
of the great Karthikeya. So when you worship her, you have nothing to worry about, and you will be blessed by the Mata Skandamata and by Skanda Bhagwan himself, Lord Karthikeya, and obviously his father Adi Sadashiv Bhagwan Shiv Ji. नवरात्रि के इस पंचम दिवस पर हम माता स्कंद माता को मानते हैं। माता स्कंद माता, स्कंद का मतलब क्या है? स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा शाब्दिक अर्थ है। कार्तिकेय भगवान सदाशिव और माता पार्वती का ज्येष्ठ पुत्र था और उनका दूसरा नाम स्कंद था। तो इसी प्रकार से स्कंद होने के कारण उनकी माता जो पार्वती जी थी, उनका नाम पड़ा स्कंद माता। तो जब जैसे आप जानते, जैसे मैंने आपको नवरात्रि के दूसरे दिवस पर मैंने ब्रह्मचारिणी, माता ब्रह्मचारिणी के बारे में आपको बताया था। तो उस कथा में मैंने आपको बताया था कि माता ब्रह्मचारिणी को माता सती का दूसरा स्वरूप थी वो। माता सती ने जब अपना देह त्याग हवन कुंड में कर दिया था, तो उनका पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ था और पार्वती जी को भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन ठोस तपस्या करने की आवश्यकता थी, जिससे वह भगवान शिव की प्राप्ति कर पाए। तो उस समय पे जब माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया था और उनका पुनर्जन्म होने के वक्त में दो राक्षस थे, ताड़कासुर और उनका एक दोस्त। उन दो राक्षसों ने पूरे संसार में त्राही मचा रखी थी। उन्होंने पूरे संसार को में दुष्टता फैला रखी थी और उनके पास एक ऐसा वरदान था कि उन्हें कोई भी देवी देवता, कोई भी उनका नाश नहीं कर सकता, कोई भी उनको नहीं मार सकता। तो कौन मार सकता है ऐसा देवता जो अभी संसार में है नहीं? तो फिर सारे भगवानों ने यह निर्णय लिया कि भगवान सदाशिव को एक पुत्र होना चाहिए और वो पुत्र ही तारकासुर और उसके मित्र का नाश कर सकता है। तो फिर सारे देवगण सब भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो पालन करता, हमारी रक्षा करिए, इस पृथ्वी की रक्षा करिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, ये सब आप लोगों की ही गलती है। अगर आप लोग दक्ष प्रजापति के यज्ञ आयोजन में न जाते, बिना शिव जी के और बिना सती के, तो सती माता जाती नहीं, तो वो अपना देह त्याग नहीं करते, तो कुछ नहीं होता। तो अभी क्या करना है? तो फिर नारद मुनि गए ब्रह्मचारिणी के पास और उनको कहा कि इस जन्म में भी आप भगवान सदाशिव की प्राप्ति कर सकते हैं अपने पति परमेश्वर के रूप में, पर इसके लिए आपको कठिन ठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो माता ब्रह्मचारिणी ने जो तपस्या की, उसके बाद भगवान सदाशिव और उनका मिलन हुआ। उस मिलन से एक बीज की उत्पत्ति हुई और वो बीज इतना तेजस्वी था, वो बीज के अंदर इतना तेज और आभा और इतना तेज था कि उससे कोई भी ऐरा गहरा इंसान कोई भी उसको नहीं संभाल सकता था। तो फिर क्या किया गया कि अग्निदेव को बुलाया गया और अग्निदेव को बोला कि आप इस बीज की रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद वह अग्निदेव के लिए भी वो बीज इतना तेजस्वी था कि वो अग्निदेव से भी नहीं संभाला गया। तब उन्होंने वो बीज को माता गंगा के हवाले किया और माता गंगा ने वो बीज को संभाला कुछ समय तक, पर वो इतना तेजस्वी बीज था क्योंकि वह सदाशिव और पार्वती जी का बीज था। उनके मिलन का बीज जो है वो इतना तेजस्वी था कि वो माता गंगा से भी नहीं संभाला गया। तो फिर कौन संभाल सकता था? उनकी माता श्री पार्वती जी। तो पार्वती जी ने जल का स्वरूप लेते हुए माता गंगा के साथ मिलन किया और फिर उस बीज का ध्यान रखा। जब उस बीज की उत्पत्ति हुई, जब उनका जन्म हुआ, तो भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए। भगवान कार्तिकेय के 6 मुख थे और उनका पालन पोषण 6 देवियों के द्वारा किया गया, जिनका नाम कृतिकाएं थी। और उनका नाम कृतिकाएं होने के कारण ही कार्तिकेय भगवान का नाम कार्तिकेय पड़ा। भगवान कार्तिकेय के जो 6 मुख है वह हमारे
शरीर के 6 चक्रों का दर्पण है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र देवी का स्वरूप माना जाता है। और जो 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र, वो सदाशिव। तो जब सदाशिव और शक्तियों का मिलन होता है तब कार्तिकेय जी प्रकट होते हैं। तो जब कार्तिकेय जी प्रकट हुए तब उन्होंने इन 2 राक्षसों का विनाश किया। और दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान को मुरुगन भी कहा जाता है, मुरुगन स्वामी। मुरुगन स्वामी पूरे देवगणों के सेनापति थे। सारे देवों के सेनापति कार्तिकेय भगवान माने जाते हैं। तो अगर कोई युद्ध होता है देव असुरों का तो उसमें कार्तिकेय ही होता है जो सेनापति का बन के पूरे सेना का मार्ग दिखाता है। तो नवरात्रि के इस पंचम दिवस पर जब हम माता स्कंद माता का स्वरूप देखते हैं तो माता स्कंद माता के 4 हस्त हैं। 2 हस्तों में कमल के फूल, 1 हस्त में कार्तिकेय भगवान जब बचपन में थे तब वो माता की गोदी में बैठते थे, वो स्वरूप है। और 1 हाथ से वो अपने सारे भक्तजनों को आशीर्वाद दे रही है। तो जब आप माता स्कंद माता को उनका आह्वान करते हैं, आप उनको अपने ध्यान में रखते हुए आप उनका उपासना करते हैं, तो आप उन्हीं के साथ उनके पुत्र कार्तिकेय का भी आह्वान कर रहे हैं। और कार्तिकेय और माता स्कंद माता के आशीर्वाद से आप सबके घर में सुख शांति रहती है। आपको माँ से कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप माता की गोदी में हैं तो आपको स्वतः ही सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। आपको उनसे भोजन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो माँ है, माँ जानती है कि मेरा बेटा भूखा है, अभी मैं उसको खिलाऊंगी। उसी प्रकार से जैसे ही आप उनकी उपासना करेंगे, आप उनके बारे में सोचेंगे, तो माता स्कंद माता और उनके पुत्र कार्तिकेय जी का आपके घर पे, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सुख समृद्धि रहेगी। आपको उनकी आशीर्वाद सदा ही रहेगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल 6ठे दिन पे मैं उनकी कथा आपको सुनाऊंगा। With this, I would like to conclude my today's beautiful story speech, and tomorrow we'll continue with the 6th day of Navratri. May Mata Skandamata's blessings shower on you. May Shri Avatar Puri Ji Siddhapit Parampara's blessings shower on you. May our Pujya Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaran Puri Ji Sadgurudev Bhagwan's blessings always shower on you. Wishing you a wonderful day or evening or night. Much love. Hari Om. स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीन् महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शलपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरी जी गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरी जी योगराज की जय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।